Welcome to the IMRAN again. I am discussing mathematics of 10th class, General Math, and the name of the chapter is factorization. Chapter number 2, factorization. We have linear factors, linear polynomials, then we have quadratic polynomials, then we have cubic polynomials. Linear polynomials in which the power of the variable is 2, and cubic polynomial where the power of the polynomial is 3. Let's have an example. Example 1. Factorize So how can we do that? We will take any factors which are come in the same table, so 3 can be taken as a common factor. 3 4s are 12. So this is the answer. Next, x square plus x plus 1 plus x square plus xy. Here I can just take x as a common factor because here x power 2 is present. Here we have raised to power 1, y raised to power 1. Take a common factor from such terms in which a variable is involved. We always, so here we have x raised to power 2 and x raised to power 1, but we'll take x raised to power 1 as a common factor. So x is left, and this is the answer. Next question is plus df. Clearly d is a common factor in these three terms, so I can take d as common, and this is the answer. We can PQ, PQ and PQ. All the terms bear PQ, and 2, 6 and 4 can are the multiples of 2. So 2 can be taken as a common factor, and the smallest power of P and Q of P and Q is P raised to power 1 and Q raised to power 1. So here we have 1. All the terms have been taken as common factor. 2 3s are 6, and P raised to power 2 becomes P and also the common factor. 2 2s are 4, P raised to power 2, and the rest is taken as common. So this is the answer. Now let's solve another example.
Here, for example, two terms, the first two terms, x can be taken as a common factor. So we have 2a plus b, and in these two terms 3 and y can be taken as common factor. 3 2s are 6, 2a plus b. So 2a plus b and 2a plus b can be taken as common. What is left is x plus 3y. This is the answer. Let's move to the next page. Second part is so this is the question. So there are terms here. These two terms 2 and 18 come in the same table, so 2 and y square and y, the smallest power of y, can be taken as common. So what is left here is x plus 2 9s are 18, 9. And here again, and z can be taken as common factor. What is left is x plus 3 9s are 27 and y. So here again x plus 9y, from these two terms x plus 9y can be taken as a common factor, and 2y plus 3z is what is left. ym plus 15y plus 2zm plus 6zn. Now we can take 5 from here as common and y. So what is left? M plus 3 are 15 and z also can be taken as a common factor. What is left is m plus 2 3 6 and n can be taken as common from these two terms. What is 2z? So example number 2 is also completed. Let's move to another example. Here we have x square plus 6x plus 9, and we want to factor. If we closely observe, x square is nothing but the square of x, and 9 is nothing but the square of 3. Plus we can apply the formula for formula and taking first term from here and second term from here. 2 3s are 6x. So this whole expression is basically formula of x plus 3 whole square. You can do resort to factorization as well. For example, the question is over here, but if you want to make some factorization, you can also do that. For example, here we have x square. X square mean 1x is put here, 1x is put here. When we multiply these two terms, we get x square. 9 is 3 times 3, so 1 3 is put here and 1 3 is put here. 3 3s are 9, and when we add these two terms, 3 plus 3 is 6. So 6 is also
that what we get, and when we multiply these two terms we get 9 as well. So this is another way of solving the same question. I shall inshallah explain this method in more detail later on. Let's the next example. T square minus 12t plus 36. Here again you can see that t square is nothing but the square of t, and 36 is nothing but the square of 6, and minus sign as it is 2 of formula. First here 2 6 are 12 t, so it is a whole square of t minus 6, and this is the answer. We have two more examples before we go to the exercise. Let's cover these examples. Here we have, first part is k square minus 81. So here k square minus 81, we can write it as, so we can apply the formula a square minus b is basically equal to a plus b into a minus b. Like this, and the question is over. Here again, this b plus c whole square. Again applying the formula, this one, we can just write it as plus b plus c, 3a minus b plus c, 3a plus b plus c, and 3a minus b minus c. So this is the answer to the question. Question is 36d square minus 1. (36d square can be written as 6d whole square, and 1 can be written as 1 square. Again applying the formula 6d plus 1 into 6d minus 1. So this is the answer, as x square minus xy. Here a can be taken as a common factor from here, and minus other we should combine these two terms and these two terms. Y. So x can be taken as a common factor, a minus x, and here y can be taken as a common factor, and we are left with a minus x. Again a x can be common factor, x plus a is what is left. Next question, question number minus 3. First and third term, let's combine first term and third term. A square can be taken as a common factor from these two terms, and 1 can be taken as a common factor from the last two terms. So a minus 3 is taken as common, a square plus 1 is what is left. Next question. X cube plus y minus xy minus x. Here taking again first term and third term, and then
second term and fourth term, and rearranging as well from now x can be taken as a common factor. So what is left? X minus y. From here minus can be taken as a common factor, and what is left is x minus y. So x minus y into x minus 1, that is the answer. Let's move to the next question. Question number 5. 3ax plus 6ay minus 8by minus 4bx. Here the first term with the third term and second term with the fourth term. Three ax plus 6ay minus 4bx minus 8by. I have just written these as it is. From these two terms I can take 3a as a common. Two terms I can take minus 4b as common factor, and what is left is x minus plus 2y. So x plus 2y and 3a minus. So now we have this question. We shall observe the question first, then it is easy to solve. यानी इस टर्म को इस टर्म के साथ अगर लिख लें और इसमें कॉमन आ सकती है 2a को कॉमन ले लें तो पीछे a माइनस बी बच जाता है. इसमें से आप c को कॉमन ले लें तो a माइनस बी बच जाता है. तो इसे लिख सकते हैं जी a माइनस बी एंड 2a प्लस c. ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. a इंटू ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी. तो यहाँ पर पहले a से मल्टीप्लाई कर लें a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, और इसके बाद इनमें से कुछ डाल लेते हैं. एग्जांपल यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लूँ, पहली दो में से a माइनस बी बच जाता है. इनमें से मैं c कॉमन ले लूँ तो a माइनस बी बच जाता है. तो a माइनस बी को ले सकते हैं और लेक्चर, बट you guys asked for it, so that's why I'm here sitting lecture. अब ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा. इन दो टर्म्स में से इनमें से अगर क्यूब कॉमन ले लें तो 2 माइनस इधर से भी, तो 2 माइनस ए 4 माइनस ए क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. होप कि आपको समझ आ रही है. ये तो लीनियर फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे.
अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 16x² माइनस 24xa प्लस 9a²। अब इस क्वेश्चन में आप देख लें कि 16x² को हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9a² को 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस है तो 2 फार्मूले का लिखा, 4x यहाँ से उठाया और 3 यहाँ से उठाया, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 4 आर 8, 8 3 आर 24, तो 24xa बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 4x माइनस 3a का होल स्क्वायर है। तो यही हमारा आंसर हुआ जी। हम 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 फार्मूले का, पहली रकम यहाँ से उठाई, दूसरी रकम यहाँ से उठाई, तो आप देख लें कि ये 7 2 14 भी बन जाता है। तो इसका मतलब है कि 1 - 7x का होल स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, 20x², 20x। रकमों को तरतीब ज़रूर देना है आपने। पहले मैं इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकलती है तो कॉमन ले सकता हूँ, 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। अब यहाँ पर रकमों को तरतीब ले लेते हैं क्योंकि तरतीब के साथ ही ज़िंदगी है। यहाँ पे -2 फार्मूले का, पहली रकम यहाँ से उठाई 2x और दूसरी रकम 1 यहाँ से उठाई, तो ये फिर से होल स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं जी। ये है जी 2a³ प्लस 2ab³ माइनस 4a²b²। से कोई चीज़ कॉमन आती है तो कॉमन ले लें। पहले 2 के टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, और ए बी स्मॉलेस्ट पावर हमने कॉमन लेनी होती है, तो ए बी हमने यहाँ से कॉमन उठा लिया, पीछे रह गया a² प्लस b² माइनस 2, यही बचता है। तो ये तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये तो भाई स्क्वायर है a - b होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 का, ये है मेरे पास x² प्लस x प्लस 1/4। अब इसे भी आप देख सकते हैं कि इसे का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 फार्मूले का लिखा, पहली रकम यहाँ से उठाई और दूसरी रकम यहाँ से उठाई, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। तो यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आई एम डूइंग इट रादर क्विकली। सो अब यहाँ पर आप देखें जी, पहली रकम का स्क्वायर है, दूसरी रकम का स्क्वायर है, उसके बाद -2 फार्मूले का होता है, पहली रकम यहाँ से उठाई और दूसरी रकम यहाँ से उठाई, तो ये दोनों रकमें आपस में यूँ कैंसिल हो जाएंगी तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x - 1/x का ये होल स्क्वायर बन रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15। आज नेट की स्पीड भी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, बट लकीली वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। लेकिन ये चीज़ मैं यहाँ से कॉमन उठा रहा हूँ। अब इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, -2 फार्मूले का, पहली रकम यहाँ से उठाई, दूसरी रकम यहाँ से उठाई, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो दरमियान वाली रकम बनती है, बिल्कुल बनती है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास x का होल स्क्वायर होगा। तो यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 16, बट एक्चुअली इट्स नॉट। अच्छा जी, अब ये सारा हिस्सा जो है ये तो पहले ही कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर है। इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? 2 कॉमन आ सकता है और
सी कॉमन आ सकता है, पीछे रह गया बी प्लस ए, जिसे आप अरेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए प्लस बी। इन दोनों रकमों में से a प्लस बी की स्मॉलेस्ट पावर है 1, उसको कॉमन ले लेते हैं, पीछे रह गया a प्लस बी प्लस 2c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जी। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।